बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, हम मैथमेटिकल मेथड्स की जो एक्सरसाइज 9.4 है, इसका टाइटल हमारे पास था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसका लेक्चर नंबर 2 हम देख रहे थे। इसका हमने क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ था। इसका किसी वजह से लास्ट से जो कुछ क्वेश्चन की वीडियो है वो किसी वजह से स्टॉप हो गई थी, तो यहीं से हम जो है इसे प्रोग्राम करेंगे। यहाँ तक हमने देखा था कि यहाँ तक हमने चेक किया था कि एम वाई और एन एक्स इक्वल आ जाते हैं। अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो इवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट है तो इसका सोल्यूशन जो है उसका फॉर्मूला हमने देखा था लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में कि एम डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स डी वाई। अब m जो है उसकी हमारे पास ये वैल्यू थी, ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन और फिर टर्म्स ऑफ n इंडिपेंडेंट ऑफ x। अब n जो है इसमें हमारे पास एक ही टर्म है, उसमें x आता है, लिहाजा कोई भी टर्म n में ऐसी नहीं है कि जो x से आज़ाद हो, तो यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा 0, ठीक है। तो यानी n में x से आज़ाद टर्म जो है वो कोई भी नहीं है, मतलब 0 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स हैं, इसकी इंटेग्रेशन अलहदा, इसकी इंटेग्रेशन अलहदा। यहाँ पे y कांस्टेंट बिहेव करेगा क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो इंटेग्रेट कर रहे हैं। सो इसकी इंटेग्रेशन के लिए मैंने कहा कि y स्क्वायर से न्यूमरेटर को भी डिवाइड किया और डिनोमिनेटर को भी। क्यों? मैं ये फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट करना चाह रहा हूँ कि 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/2a log ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x। ये जो आपकी इंटर लेवल की इंटेग्रेशन है उसमें ये फॉर्मूला इसका प्रूफ भी अवेलेबल है। सो यहाँ पे हमने देखा कि 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूटिलाइज किया, ये y इस y से कट हो गया और यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, y एलसीएम आ गया, एलसीएम ऊपर नीचे जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कट हो जाएगा, तो हमारे पास बचा 1 प्लस एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का लॉग, और यहाँ पे इसके साथ प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो स्टार्ट से आ रहा है। तो ये हमारे पास बना सोल्यूशन, ठीक है व्यूअर्स। तो दैट इज इक्वल टू ये सी डबल प्राइम है, तो ये सी डबल प्राइम को एक मतलब हमने कैपिटल सी कह दिया। तो दिस इज योर सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे और लेक्चर नंबर 3 पे चलेंगे। उसमें भी मैंने इसी एक्सरसाइज जो 9.4 है इसके कुछ क्वेश्चन जो हैं वो सिलेक्ट किए हुए हैं। तो व्यूअर्स हम देखते हैं। तो व्यूअर्स हर एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ उनके अलावा जो क्वेश्चन बीच में हैं वो उन्हीं से रिलेटेड है मैक्सिमम क्वेश्चन। फिर भी अगर आपको उन क्वेश्चन में कोई भी इशू आता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वो बाकी जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हुए हैं वो असाइनमेंट के तौर पे छोड़े हुए हैं, तो अगर आपको उस असाइनमेंट में कोई मसला आता है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को फैसिलिटेट करूँगा। तो ये चलते हैं लेक्चर नंबर 3 में। लेक्चर नंबर of exercise 9.4 and the questions which are going to be solved are firstly question number 8, where the statement of the question is y secant square x plus secant x tan x dx plus tan x plus 2y dy is equal to c. Plus 2y dy is equal to 0. This is our question number 8 of exercise 9.4. I am going to repeat the statement: y secant square x plus secant x tan x plus tan x plus 2y dy. This is our question. Solution.
व्यूअर्स आप देखिएगा जो डी एक्स के साथ लिखा हुआ है इसका कोएफिशिएंट डेफिनेटली वो m की वैल्यू है। m इज इक्वल टू y secant square x plus secant x tan x, and here the value of n is tan x plus 2 and to check whether the given differential equation is exact or not, we have to find my. My means partial upon partial y of y secant square x plus secant x tan x। देखिएगा विद रिस्पेक्ट टू y, जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो बिकॉज ये हमारे पास y कांस्टेंटली बिहेव सॉरी सीकेंट स्क्वायर x कांस्टेंटली बिहेव करेगा और y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा प्लस इस सारे फंक्शन में हमारे पास x इन्वॉल्व हो रहा है और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y डेफिनेटली ये वैल्यू हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया सीकेंट स्क्वायर x। सिमिलरली व्यूअर्स हम according to rule to check the exact differential equation we have to find nx now. What is nx means? Nx means partial upon partial x of tan x plus 2y। तो वीएस डेफिनेटली देखिएगा विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है secant square x plus 2y जो है विद रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव वैनिश हो जाएगा, दैट मस्ट बी secant square x। तो भैया जैसा कि आपने देखा my की वैल्यू secant square x है, nx की वैल्यू भी secant square x है, दोनों की वैल्यू सेम है तो यहाँ पे हम लिखते हैं that since my is equal to nx, so given differential equation is exact। ठीक है भैया, तो यही कंडीशन है हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कि अगर एम वाई और एम एक्स इक्वल आ जाए तो फिर अगर ये एग्जैक्ट है सो solution is, what is the formula to find the solution of the exact differential equation? m dx plus terms of n but independent of x dy is equal to c। ये फॉर्मूला हम पहले 2 लेक्चर में डिटेल में देख चुके हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड में हमारे पास करेक्ट ये फॉर्मूला है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, दैट इज y secant square x, y secant square x plus secant x tan x, secant x tan x dx। ठीक है व्यूअर्स, m की हम इंटीग्रेशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x प्लस टर्म्स ऑफ n इंडिपेंडेंट ऑफ x dy। नाउ टर्म्स ऑफ n, there are two terms in n, that those are tan x and 2y, but we need to have those terms which are independent of x, so these terms involve x, so this must be omitted। The only term in n is 2y which is independent of x, so the integral is just of 2y dy is c। ठीक है भैया, तो n में हम वो टर्म्स लेते हैं जिनमें x नहीं है, तो ये हमारे पास tan x था, ये हमने नहीं टर्म ली और सिर्फ एक टर्म ली 2y। अब यहाँ पे व्यूअर्स देखिएगा y कांस्टेंट बिहेव करेगा क्योंकि इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू x और इंटीग्रेशन हमारे पास आएगी जस्ट secant square x dx प्लस इसके इंटीग्रेशन अलग कर देते हैं secant x tan x dx प्लस 2 कांस्टेंटली बिहेव करेगा और y के इंटीग्रेशन आ जाएगी y स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू। ठीक है व्यूअर्स, तो ये 2 जो है ये इस 2 को
कैंसिल करेगा। सो हमारे पास देखिएगा y सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन सभी को पता है, दैट इज tan x प्लस सीकेंट x। tan x की इंटीग्रेशन हमारे पास है सीकेंट x प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू सी। सो व्यूअर्स आपने देखा कि बहुत सिंपल है, आपने जस्ट फॉर्मूला यूज किया है और इंटीग्रेशन भी आपकी बेसिक है, बिल्कुल आसान इंटीग्रेशन है। और इंटीग्रेशन के बाद हमने सिंप्लीफिकेशन की और यही व्यूअर्स आपका फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है व्यूअर्स, इसी को हम इंशाल्लाह इसी लेक्चर में क्वेश्चन नंबर जो है वो 10 को देखते हैं। तो मैंने चूज किया हुआ है 9 वाला, आप लोग ट्राई करिएगा एज एन असाइनमेंट। अगर उसमें कोई मसला आएगा तो फिर आप इनसे डिस्कस कर सकते हैं। सो लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज दैट? The statement of question number 10 is y e raised to power xy cos 2x minus 2 e raised to power xy sin 2x plus 2x with dx plus x e raised to power xy cos 2x minus the dy is equal to c. Sorry, is equal to c. This is our question. व्यूअर्स यहाँ पे देखिएगा सॉल्यूशन के लिए जो हमारे पास dx के साथ मिलता है, दैट इज इन एट द वैल्यू ऑफ m। Here m is equal to y e raised to power xy cos 2x minus 2 e raised to power xy sin 2x plus 2x, and the value of n is x e raised to power xy cos 2x minus 3. So to check whether the given differential equation is exact or not, very firstly we are going to find my means the partial derivative of m with respect to y. We need to say partial upon partial y of y e raised to power xy cos 2x minus 2 e raised to power xy sin 2x plus 2x। ठीक है व्यूअर्स, अब इसमें हमारे पास m में 3 टर्म्स हैं हमारे पास, ये भी हमारे पास एक टर्म है, एक सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये। अगर फर्स्ट टर्म की बात की जाए विद रिस्पेक्ट टू y, इसमें भी y इन्वॉल्व हो रहा है, इसमें भी y इन्वॉल्व हो रहा है, जबकि इसमें y नहीं है, तो ये फिर कांस्टेंट बिहेव करेगा, मस्ट स्टे आउटसाइड। मीन टू से cos 2x will stay outside, the partial derivative with respect to y is only of y e raised to power x। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पे देखिएगा माइनस 2 कांस्टेंट भी बिहेव करेगा, ठीक है, इसमें भी y आ रहा है, इसमें y नहीं है, तो फिर sin 2x भी कांस्टेंट भी बिहेव करेगा। मीन से 2 sin 2x will stay outside, the partial derivative with respect to y is only of e raised to power x। ठीक है भैया, और प्लस ये देखें 2 भी कांस्टेंट और y के लिहाज से x भी कांस्टेंट है, सो इट्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है भैया, अब हम इसको देखते हैं कि cos 2x इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा, बिकॉज वी हैव टू फंक्शन, one is the algebraic function and the second is exponential function। So use the product rule, take the derivative, so this y will stay as it is,
e raised to power xy will remain same, and the derivative of xy with respect to y, x1 will stay outside and the derivative of y will be 1, plus e raised to power xy will stay as it is and the derivative of y will be 1. ओके भैया, तो ये हमारे पास जो है ये कंप्लीट हो गया इसका प्रोडक्ट डन। और फिर हमारे पास है -2 साइन 2x एज इट इज, e रेज़ टू पावर xy का डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर xy का फर्दर डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा x। तो इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं बिकॉज़ ये भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा फिर इन सब में से देखिए ये e पावर xy, ये भी e पावर xy, ये भी e पावर xy कैन बी टेकन एज कॉमन, या ना भी कॉमन लें ऐसे भी ठीक है। तो तुम्हारे पास बन जाएगा xy cos 2x e raised to power x plus cos 2x e raised to power xy minus 2x sin 2x e raised to power x. So because this is the final value of partial derivative of n with respect to y. Now need to find partial derivative of n with respect to x. Now nx is equal to partial upon partial x of x e raised to power xy cos 2x minus 1. So here check that we have two terms inside. So we have to take the partial derivative with respect to x. So x here also, here also, here also. So we have 3 times x in the single term. First one is involving as algebraic expression, second one as involving in exponential, and the third one in the third one x is involving in trigonometric function. So we have to use product rule to find the derivative, and in the second term there is no variable involved, so the derivative of this minus 3 will vanish. We need to say x will remain as it is, e raised to power xy will remain as it is, the derivative of cos 2x will be minus sin 2x and the derivative of 2x will be 2. Then plus x will remain as it is, cos 2x will remain as it is, the derivative of e power xy is e raised to power xy, and the further derivative of xy with respect to x will be y into 1. Yes, then plus again e raised to power xy will remain as it is, cos 2x will remain as it is, the derivative of x will be 1. Now the product rule completes. We have taken the derivatives of all the 3 terms, and lastly the derivative of minus 3 is 0. Now try to make simplification. Plus minus will become minus. We have 2x sin 2x e raised to power xy, then plus xy cos 2x e raised to power xy, then plus cos 2x e raised to power xy. This is the final value of nx. Now make the comparison of my and nx. Check that please. xy cos 2x e raised to power x, xy cos 2x e raised to power x, xy cos 2x e raised to power xy. ठीक, ये टर्म इसमें भी है x में भी है. Look at second. Cos 2x e raised to power xy, cos 2x e raised to power xy. Okay. Last one, minus 2x sin 2x e raised to power xy, minus 2x sin 2x e raised to power x. Done. It means that
It means that the value of my and nx are same. Values of my and nx are same. So what is that meaning? It means that the given differential equation is exact. So I'm going to write that since my is equal to nx, so given differential equation is exact. Curious? Now, if the given differential equation is exact, then so solution is, what is the formula to find the solution? M dx plus terms of n independent of x dy is equal to c. So what is the value of m? What is the value of m? We need to say that y e raised to power xy cos 2x minus 2 e raised to power xy sin 2x plus 2x dx plus terms of n. N has two terms. The first one involves x, the second term doesn't involve x. So minus b dy is equal to c. इसमें हमारे पास क्योंकि दो टर्म्स में से पहली टर्म में एक्स इन्वॉल्व हो रहा है, वो टर्म हमें मिट करना पड़ेगी, जस्ट सेकंड टर्म हमारे पास आएगा। अब यहाँ पे देखिएगा इसकी इंटीग्रेशन अलग करनी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई जो है वो बाहर स्टे करेगा, इंटीग्रेशन आएगी जस्ट ई रेज़ टू पावर एक्स बाय cos 2x dx माइनस 2 बाहर स्टे करेगा और इंटीग्रेशन आएगी जस्ट ई रेज़ टू पावर एक्स बाय sin 2x dx प्लस 2 बाहर स्टे करेगा, x की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x और ये देखिएगा माइनस 3 बाहर स्टे करेगा, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डन। तो यहाँ पे मैं इसकी इंटीग्रेशन करने जा रहा हूँ बाय पार्ट्स। ठीक, इसमें दो फंक्शंस हैं, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। So whenever you have the product of two functions and you want to find the integration of that product of two functions, so we have a simple formula to get the integration of that product of two functions. That is Eilert rule. This rule is much more fruitful to find the product of the integration of product of two functions, where I stands for inverse trigonometric function, L stands for logarithmic function, A stands for algebraic function, P stands for trigonometric, and E stands for exponential function. So right according to this sequence, you will make the order of two terms of the product of two terms, and you have to make the integration according to this rule. Here we have exponential function and trigonometric function. So what comes first, E or T? So here we can see that T comes first. So we can integrate this one by taking trigonometric function firstly, and secondly you can take the exponential function. So viewers, यहाँ पे देखिएगा, इसको हम इंटीग्रेशन इसकी बाई पार्ट्स करने जा रहे हैं। y will stay outside and u as it is, we need to say cos 2x because t comes first, so t will be taken as first function, and the formula to find the integration by parts is integration of u v dx is u as it is the integration of v minus derivative of u integration of v, and again integration with respect to
So this formula you have been used so many times before in intermediate. So quite simple here. I have taken cos 2x as first function and e raised to power xy as second function. So the integration of e raised to power xy is e raised to power xy upon y, because in integration we have to divide by the further derivative, and the further derivative of xy with respect to x is 1. So we have divided this one. Minus derivative of cos 2x. The derivative of cos 2x is minus sin 2x, and the further derivative of 2x is 2. And the integration of e raised to power xy is same, e raised to power xy upon 1, and its integration again. Minus 2 as it is, here's e raised to power xy sin 2x dx. इसकी इंटीग्रेशन मैंने नहीं की है, फिलहाल ऐसे ही छोड़ दिया है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक फंक्शन बनेगा जो इसके साथ कट करेगा, प्लस 2x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3 की इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू। तो ये देखिएगा, जब इसको इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा y cos 2x e raised to power xy upon y minus minus will become plus, this y will be multiplied by this one y, ये 2 भी आउटसाइड लिखा जा सकता है अपॉन y भी आउटसाइड लिखा जा सकता है, और इन साइड देखिएगा हमारे पास sin 2x e raised to power xy dx minus 2 e raised to power xy sin 2x dx. This 2 will cancel 2, this y will cancel by this y. ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे पास है प्लस। नाउ here we have plus x square minus 3x is equal to, now here we have cos 2x e raised to power xy plus integration of sin 2x e raised to power xy dx minus ये 2 outside minus 2 e raised to power xy sin 2x dx plus x square minus 3x is equal to। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ये नेगेटिव टर्म ये पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को कट करेंगी। सो वी हैव cos 2x e raised to power xy plus x square minus 3x is equal to, so this is your solution of the given exact differential equation। यह होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। तो आपने देखा है कि मेथड इंतहाई आसान है, जितनी हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस देखी हैं, होमोजीनियस थी, नॉन होमोजीनियस थी, नॉन होमोजीनियस बट रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस थी, वो हमने सभी के सॉल्यूशंस देखे। उन सब में ये सबसे आसान है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में इस एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक इजाज़त दीजिएगा, और लास्ट पे ये बात कहूँगा, मैक्सिमम लोगों तक मेरे लेक्चर्स आप शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दुआओं में याद रखिएगा। सी यू अगेन, अल्लाह हाफिज़।